So with that introduction of how to write a course of a cranial nerve, what are the various functional components, we start describing the first cranial nerve, and not the first cranial nerve. First cranial nerve we will be studying systematically, and that is the easiest one I have selected, and that is the hypoglossal or the 12th cranial nerve. So what is the first thing we have to write in any cranial nerve? Functional components. So we are describing the 12th cranial nerve, the functional components of which, chalo, look at the chart and tell me what are the functional components. General, somatic, efferent. General, somatic, efferent. Why? Because in head, face, neck, muscles, only two group of muscles develop from somites. One is the muscles of the tongue which develop from occipital somites, and muscles of extraocular muscles which develop from pre-occipital somites. Okay? And therefore 3, 4, 6 and 12 have this component. What is that component? General, somatic, efferent. Okay? This is the functional component. In some textbooks, you will also find general, somatic, afferent. Now, what is this component, general, somatic, afferent? It is for the proprioception from these cranial nerves. But all the proprioception of the head, face, neck muscle go to mesencephalic nucleus of trigeminal. Mesencephalic nucleus of trigeminal receives proprioception of all the muscles. So actually this will be there, but it will hand it over to fifth nerve, and it will go to the mesencephalic nucleus. Mesencephalic lies in the midbrain. If you remember, only first order neurons which lie in the central, inside the brain. Okay? So now we go to this. How do we write the course of this nerve? Course. So what is the first point in the course? Yes. Okay. What is the first point in the course of nuclei? So where is the hypoglossal nucleus? Floor of the fourth ventricle, vagal triangle, hypoglossal triangle, right? So there, then we start with that nuclei. Where is the nuclei? In the floor of the fourth ventricle, which is in the medulla. From the point where the nerve arises, we can predict where the nucleus is. 9, 10, 11, 12 from medulla, their nuclei. 5, 6, 7, their nuclei will be in pons. 3, 4, their nuclei will be in midbrain. So we draw a diagram. At the mid-olivary level. You remember this diagram? Mid-olivary level. This is the open part of the medulla. Here is hypoglossal nuclei, then vagal nucleus, 12th, 10th, then inferior cerebellar peduncle. Okay, then here is medial lemniscus. Okay, this is pyramid, midline fissure, anterolateral fissure, posterolateral fissure, right? This is posterolateral fissure. Where is the hypoglossal nerve scheduled to come out? From which fissure? It is attached to? Okay. Here is inferior olivary nucleus, right? Correct? So now, when we, inferior cerebellar peduncle will be like this. So we have written where is the nucleus. Where is the nucleus? Medulla. In the floor of the fourth ventricle, in the hypoglossal triangle. So now we write the intraneural course. So this is intraneural course.
So what do we write in the intraneural course? The nerve fibers move forward. They move forward between medial lemniscus and inferior olivary nucleus. Medial lemniscus on medial side, inferior olivary nucleus on the lateral side. Then what is the next point? What is the next point? Where does it appear on brainstem? What was the first point? Where is the nucleus? Then intraneural course, it has run through the brainstem like this. Now where are we? Appearance on brainstem. Where does it appearance on brainstem? Anterolateral fissure of medulla. Anterolateral fissure of medulla. Clear? After that, what comes after the appearance on the brainstem? What comes next? Intracranial course. So the nerve moves forwards. The nerve moves forwards. So for this you have one more diagram. So this is diagram number 1. Diagram number 2 is this. You draw the medulla. You can draw the whole brainstem. You draw the pyramid. You draw the olives, and then you draw how this hypoglossal nerve takes origin. So this is the diagram for that from the medulla. So it moves forwards towards the hypoglossal canal. So then what is the next point? Exit from foramen. Which foramen it comes out? It comes out of the hypoglossal foramen. Okay? Also called as anterior condylar canal. Also called as anterior condylar canal. You are with me on this? So now what is the next point? What is the next point after this? Extracranial course. Extracranial course. So then here you write that this nerve lies, after it comes out of the hypoglossal canal, it lies in the carotid sheath. It lies in the carotid sheath along with internal jugular vein, internal carotid artery, and the 9, 10 and 11th cranial nerve. It lies in the carotid sheath. Then what happens? Then it crosses external carotid artery and internal carotid artery from outer side. It crosses internal and external carotid artery from the outer side. So these are the two arteries. See, external carotid is like this, internal carotid is like this, common carotid is like this. Hypoglossal nerve crosses them externally. In this process, it passes from carotid triangle to digastric triangle. All these triangles we have studied, right? Carotid triangle to digastric triangle, those who are not able to see. Carotid triangle, digastric triangle. What lies in the depth of the digastric triangle? Submandibular region. And then it proceeds to the submandibular region. Submandibular region, where it ends by supplying the muscles of the tongue. Where it ends by supplying the muscles of the tongue. Okay, again I'll repeat, because this is the first cranial nerve you are studying. We are talking about the 12th nerve. Nucleus, where is it? Floor of the fourth ventricle. That's the first point. Intraneural course. What is the intraneural course? It passes with medial lemniscus on medial side and inferior alveolar nucleus on the lateral side. Pyramid on the medial side,
inferior olivary nucleus on the lateral side. It comes out on the brainstem where anterolateral fissure moves forwards towards the hypoglossal canal. That's the extracranial. What is the extracranial course? So that was the intracranial. What is extracranial course? Enters the carotid sheath, then leaves the carotid sheath. लिखना है वो आपको इधर एक point. Leaves the carotid sheath and crosses external carotid artery and internal carotid artery from the outer side. This happens in the carotid triangle. From there it enters the digastric triangle. Then it goes in the depth of the digastric triangle where it enters the submandibular region and ends by supplying the muscles, all the muscles of the tongue except palatoglossus. There are 4 intrinsic muscles of the tongue and 4 extrinsic muscles. What are intrinsic muscles? Their origin and insertion is inside the tongue. What are extrinsic muscles? Their origin is outside the tongue and insertion is inside. Okay, so this is glossus family. सबका सरनेम सेम रहता है घर में. Glossus family, palatoglossus, genioglossus, hyoglossus, styloglossus. Genioglossus, the most important muscle of the tongue, वो father. Palatoglossus, mother. Styloglossus, son या daughter, क्या करेंगे? कौन ज्यादा हाँ daughter, okay चलो. Styloglossus. और क्या रहेंगे? Hyoglossus. ना एक्चुअली मैं वो सन को बोलता था, इंडियन ट्रेडिशन. स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस डिप्रेसेस द टंग. उसको सब डॉक्टर को डिप्रेस करके रहते हैं अनफॉर्चुनेटली. पैलेटोग्लोसस तो एक्चुअली हाइपोग्लोसल ना होना. सास बहू के सीरियल में सास है, सास सबको कंट्रोल करती. और पैलेटोग्लोसस क्या है? बहू. वो दूसरे घर से आई है. वो उसका फैमिली पहला कौन सा था? पैलेटो. पैलेटो से शादी करके वो कहां पे आई है? ग्लोसस. वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही है हाइपोग्लोसल में होके. वो शादी हो जाएगा आपको समझेगा कैसा होता है. वो उधर से कंट्रोल रहता है. वो पैलेट से कंट्रोल हो रहा है उसका सारा. जाने दो. हाइपोग्लोसल नर्व एज इट इज कमिंग हियर, उसके साथ ना C1 के फाइबर्स जुड़ जाते हैं. C1. दिस C1 देन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म्स डिसेंडेंस हाइपोग्लोसिया. आंसर सर्वाइकलिस हमने पढ़ा है ना. C2, C3. ओके. सो there are some muscles, genio, hyoid and all supplied by C1, but they are not the muscles which are supplied by hypoglossal. हाँ, अपने कैसा चलता है ना, ओए तू उधर जा रहे जाते जाते ये दर्द लेना, ऐसा काम बताया रहेगा ना आपको सोसाइटी में, घर वालों ने. कॉलेज जा रही है ना तो जरा सा ये बिल भरते जाओ. तो वैसे C1 हाइपोग्लोसल को देखते थे. तो नेक में जा रही है ना, इधर इधर फाइबर लेके जाना, जीनियोइड को देना थोड़ा सा. ओके. बाकी फिर ये स्ट्रैप मसल्स ऑफ नेक देना दे तो ठीक है, वो दे देते. बट दीज आर नॉट द मसल्स supplied by hypoglossal. Hypoglossal muscle supplies 4 intrinsic and 3 extrinsic muscles of the tongue. Okay. Now relations. अरे ये तो मैंने डायग्राम आपको दिखाला. डाइगेस्ट्रिक रीजन में कौन सा डायग्राम निकालोगे? जो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार निकाल के दिखाया है. दिस इज हायोग्लोसस. दिस आगे is genioglossus. This is hyoglossus. Lying on that, ये कौन सा नर्व है? किसी को याद है? Lingual nerve. Then submandibular ganglion. Fibers supplying deep part of submandibular. And this is the hypoglossal nerve. तो ये डायग्राम और एक. सो ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, 4 डायग्राम्स आपको निकालने हैं फॉर राइटिंग द हाइपोग्लोसल नर्व. ओके. कमिंग टू द अप्लाइड एनाटॉमी. मसल सप्लाइड में मैंने आपको बताया. मसल सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व लिखने का. फिर मसल सप्लाइड बाय C1, जीनियोहायोइड, देन थायरोहायोइड,
through descendants hypoglossal. Applied anatomy. Hypoglossal nerve, of course, उसका न्यूक्लियस यहाँ से न्यूक्लियस विल बी कनेक्टेड टू द ऑपोजिट कॉर्टेक्स. अभी ये न्यूक्लियस मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं. ओके ओके, पूरा न्यूक्लियस ऑपोजिट साइड के कॉर्टेक्स को जाता है. वापस मैंने इधर दो पार्ट कर दिया न्यूक्लियस का. वन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द जीनियोग्लॉसस मसल. ये जो जीनियोग्लॉसस मसल है ना, दिस इज द ओनली मसल विच पुल्स द टंग फॉरवर्ड्स. जीनियोग्लॉसस, सब लोग करो, सब लोग पुल द टंग फॉरवर्ड. फास्ट 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 फास्ट. किसने किया ये? जीनियोग्लॉसस. क्या इंपॉर्टेंस है इस मसल का? आपको क्यों मैंने ये बोला करने को? बिकॉज जब आदमी अनकॉन्शियस होके गिरता है ना, तो सारे मसल्स ऐसे लैक्स होते, एंड जीनियोग्लॉसस इज द सेफ्टी मसल ऑफ द टंग. इट फॉल्स बैक एंड चोक्स द थ्रोट. तो कोई भी अनकॉन्शियस गिरा तो पहले उसको साइड में लो, उल्टा करो और पुल द टंग. पुल द टंग. द टंग शुड नॉट. ओके, पैरालिसिस अटैक आ गया किसी को, इफ इट्स इन्वॉल्विंग द 12th नाउ. ओके, नाउ व्हेन द वन साइड, सो जीनियोग्लॉसस जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस वो सेम साइड कॉर्टेक्स को भी कनेक्टेड रहता है. समथिंग लाइक द फेशियल, समथिंग लाइक द फेशियल नाउ. So the tongue, there are two categories of muscles you will see in head, face, neck, and their paralysis are different. One category is pushing the angle of mouth or pushing the structures from behind, and one category is pulling from ahead. पुलिंग फ्रॉम अहेड. पुलिंग फ्रॉम अहेड अपने बैलगाड़ी देखे रहेंगे, बैलगाड़ी. सो दोज मसल्स, बोथ साइड मसल्स विच आर पुलिंग समथिंग फ्रॉम अहेड, इसमें से एक बैल पैरालाइज हो गया और ये चलता रह गया, तो क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी कहां जाएगी? टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड. ओके, इट विल मूव टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड. और जो पीछे से धक्का देने वाले मसल्स हैं, उनमें क्या होता है? दे मसल्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड. फेस में आपने क्या पढ़ा? फेस हो गया आपका? अभी आप बताओ मुझे. व्हेन यू पर्सन ट्राइज टू स्माइल, वेयर डज द फेस मूव? टुवर्ड्स पैरालाइज साइड और नॉर्मल साइड? नॉर्मल साइड, बिकॉज ये सारे मसल्स पीछे से धक्का दे रहे. ओके, तो ये साइड नॉर्मल है और आदमी को समझ में नहीं आता, मैं स्माइल करने को गया, ये पैरेलल इधर क्यों जा रहे हैं? तो पीछे से धक्का दे रहे. ओके, और जो आगे से खींचते हैं उनका क्या? दे मूव टुवर्ड्स द पैरालाइज साइड. ओके, so in case of tongue it will move towards the paralyzed side. The tongue, if it tries to move the tongue, take the tongue out, this side is paralyzed, tongue will move here. Face, this side is paralyzed, person tries to smile, it will move this side. Okay, thank you. That's all about the hypoglossal now.